हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आज हम लोग अपने वीडियो में जीएसटी एक्ट 2017 को डिस्कस करेंगे। जीएसटी एक्ट 2017 आप सभी जानते हैं, जीएसटी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स इंडिया में हुआ। इसकी कहानी सिंस 2000 से चालू हुई और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट वजूद में आया। इनफैक्ट जीएसटी एक्ट 2017 came into existence on July 1st, 2017, 17 सालों के बाद। और मैंने जैसा कहा आपके सामने कि जीएसटी आज़ादी के बाद सबसे बड़ी इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स इंडिया में हुआ। आइए हम लोग जीएसटी एक्ट 2017 का कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करें। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है कि जीएसटी एक्ट 2017 केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 1st, 2017। नाउ हम पहले आपको ये बता दें कि टैक्स होता क्या है। टैक्स मनी दैट पीपल, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, हैव टू पे टू द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड टैक्स। मनी दैट पीपल हैव टू पे, यानी पे करना कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। टू द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड टैक्स। तो हम लोग चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के प्रति जो पैसा हम लोगों से कहा जाता है पे करने के लिए, दैट मनी इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स बेसिकली दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी टैक्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आइए हम लोग ये पहले समझ लें कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स, आइए उसको समझने से पहले एक हम पिक्चर को लेकर चलते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स है। ये यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पर भी एक इंडिविजुअल है। As you know, a person who pays tax is called a taxpayer. Now, अगर टैक्सपेयर टैक्स को अपने इनकम से पे करे तो उस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन कांट बी ट्रांसफर्ड या कांट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यहाँ पर देखिए, अगर ए को टैक्स अपने इनकम से पे करना पड़ेगा तो देन इस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अगर ए टैक्स को बी से कलेक्ट करना देन गवर्नमेंट को पे करेगा तो इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी टैक्सपेयर अगर अपना बर्डन को दूसरे तक ट्रांसफर या शिफ्ट कर सकता है तो वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। और जब वो अपना बर्डन को दूसरे तक शिफ्ट या ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो उस टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स can't be transferred या equal as shifted
पेइंग टैक्स एक बर्डन है, उस बर्डन को आप दूसरे तक ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तब उस टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर इस को हम दूसरे वर्ड्स में समझाएं तो कह सकते हैं कि when a taxpayer has to pay tax out of his own income, then such a tax is called direct tax. Example, income tax। यानी आपके सामने मैंने डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दिया, वो है इनकम टैक्स। नाउ burden of paying tax can be transferred I mean shifted। अगर टैक्स पे करने का बर्डन टैक्स पेयर किसी और तक शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो उस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी एग्जांपल में मैंने बताया, इफ ए इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द सेम टाइम ए इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम बी, देन सच अ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल जीएसटी। राइट नाउ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के रूप में अवेलेबल है। तो सो मैंने अभी टैक्स, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स इज classified into two categories. One category is called direct tax, while the other category is called indirect tax. Now we have to distinguish between direct tax and indirect tax. अगर इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इफ द टैक्स पेयर कैन शिफ्ट या ट्रांसफर द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स to another person, then such a tax is called indirect tax। Example GST है। When the taxpayer can't transfer या can't shift the burden of paying tax to another person, then such a tax is called direct tax, that is income tax। Okay, now जैसे कि आपको सामने मैंने बताया कि टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ हम लोग का आज का वीडियो में जो टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी is an indirect tax। Indirect tax levied मतलब चार्ज on the supply of goods and services। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जीएसटी जो है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये दोनों चीज़ों पर लेवी किया जाता है, गुड्स पर भी और सर्विसेज में भी। इनफैक्ट जीएसटी रेट इज अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट taxation for the entire country। GST system is a unified indirect tax system for the entire country। इसको अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो it means GST regime is one tax is for the entire country। यानी इसको कह सकते हैं कि GST regime is one
for the entire country. यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied or charged on the supply of goods and services. Okay, GST system is a unified indirect tax system for the entire country. GST regime is one indirect tax for the entire country. Now, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम जिस टैक्स की बात कर रहे हैं उस टैक्स का नाम जीएसटी है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जो जीएसटी का जो सिस्टम है, रेजिम है, वो यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है फॉर द एंटायर कंट्री. आप यूँ कह सकते हैं कि जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री. ओके, नाउ जीएसटी के कुछ फीचर्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ इससे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रेजिम था, यानी वैट सिस्टम थे, उसमें तीन वर्ड्स यूज होते थे. एक वर्ड मैन्युफैक्चर, एक वर्ड था सेल, नाउ तीसरा वर्ड था प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इन तीनों वर्ड को यानी मैन्युफैक्चर, सेल और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तीनों वर्ड को एक वर्ड रिप्लेस कर दिया. वो वर्ड है सप्लाई. यानी अंडर जीएसटी रेजिम, अंडर जीएसटी सिस्टम, the word supply has replaced the three words manufacture, sale and provision of services under the previous indirect taxation regime under GST. Now, supply. Okay, now supply whether of goods or services has to be taxed under GST regime. ये सप्लाई बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक इंटर स्टेट, एक इंट्रा स्टेट. ओके, नाउ सप्लाई हैज टू पार्टीज. One party is called supplier and other party is called recipient. A supply would have two parties, supplier and the recipient. Normally it is the duty of the supplier to collect and pay GST to the government, and this is called forward charge under GST system. In some cases, it is the recipient who is liable, who would be required to pay GST to the government, and this situation is called reverse charge. Okay. Now GST में जो चार्जेबिलिटी है वो दो ग्रुप में बटी हुई है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज. ओके, it is the supplier who is liable to pay GST, this is called forward charge. Forward charge यानी forward charge, under forward charge it is the supplier who is liable to pay GST. Under GST there are two systems of chargeability. One is called forward charge and the other is called reverse charge. Now in some cases, यानी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि सप्लाई का दो पार्टी है, एक सप्लायर एक रिसिपिएंट. जो चार्जेबिलिटी है it is on the part of the supplier. Normally it is the supplier who is liable to pay GST under GST regime.
and this is called forward charge under GST system. In some cases, it is the recipient who is liable to pay GST. This is called रिवर्स चार्ज। इसको हम लोग रिवर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। यानी इन सम केसेस इट इज द रिसिपिएंट नॉट सप्लायर, रिसिपिएंट who is liable to pay GST. Such a situation is called reverse charge because chargeability is reversed from the supplier to the recipient. तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो जीएसटी का रेजिम आया उससे पहले जो वैट रेजिम था उसमें 3 वर्ड्स यूज होते थे, मैन्युफैक्चर, सेल एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इन तीनों वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड सप्लाई। एंड अंडर जीएसटी रेजिम a supply would have 2 parties, one is called supplier and the other is called recipient. Normally, it is the supplier who is liable to pay GST and this is called forward charge. In some cases, it is the recipient who is liable to pay GST and this is called reverse charge. Yani under GST system, there are 2 systems of chargeability. One is called forward charge and the other is called reverse charge. Under forward charge, it is the supplier who is liable to pay GST. Under the reverse charge, it is the recipient who is liable to pay GST. Now, GST जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बारे में कुछ बातें आपको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। GST is comprehensive. Number 2, multi-stage. Number 3, destination based tax system. देखिए मैंने बोला कि जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो न्यू सिस्टम आया है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो मल्टी स्टेज है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। आइए इस बात को समझते हैं कि हाउ कैन वी से दैट जीएसटी रेजिम इज कॉम्प्रिहेंसिव, इज मल्टी स्टेज, is a destination based tax system. इस बात को समझने के लिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको एक बात जानना होगा कि जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रेजिम होता था, जिसको हम लोग वैट सिस्टम बोलते थे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन सेवरल फॉर्म्स लाइक सीएसटी, लाइक वैट, स्टेट वैट, like service tax, like excise duty, like custom duties, entertainment tax, purchase tax, entry tax और क्राय, इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी सबस्यूम कर लिया। यानी जीएसटी है सबस्यूम स्टेट वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, डॉट इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने क्या कर दिया, सबस्यूम कर लिया। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। We can say GST is comprehensive because it has subsumed all
forms of indirect taxes levied under the previous regime called VAT system, जैसे कि स्टेट वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑफराय, लग्जरी टैक्स, इन सब चीज़ों को सबसिम कर एक सिंगल टैक्स बन गया जीएसटी. सो वी कैन से जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव. नाउ बात आया मल्टी स्टेज पे. हाउ कैन वी से जीएसटी इज मल्टी स्टेज? देखिए सप्लाई चेन बोले तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल सेल टू द कंज्यूमर. दिस प्रोसेस हैज सेवरल स्टेजेस and at each stage on every value addition GST is levied. यानी पूरी सप्लाई चेन में जितने भी स्टेजेस आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर टू फाइनल से टू द कंज्यूमर. At each stage on every value addition GST is levied. मतलब on each stage during the supply chain on value addition GST is levied. यानी हम इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वाई जीएसटी इज मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ऑन ईच स्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन बोले तो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल सेल टू द कंज्यूमर. ऑन एवरी वैल्यू एडिशन जीएसटी इज लेविड. सो वी कैन से जीएसटी इज अ multi-stage indirect tax system. Now, destination list. How can we say GST regime, GST system is a destination-based tax system? Under GST regime, we can under GST system, GST is collected at the place of supply. मतलब under GST regime, GST is levied the place where goods are delivered. Under GST regime, GST is levied at the place of supply. That is the place where